learn Newton's third law of motion. In pre, we have learned that Newton's first law, how it works, Newton's second law, what it tells. In Newton's first law, we observe that the state of motion of an object can be changed only by the application of force. In second law, we study that in Newton's second law, we studied about how much changes can be brought after the application of force. In third law, we will study about the how forces are exerted on a body. Means in third law we will discuss how forces exerted on a body. According to Newton's third law, to every action there is always an equal and opposite reaction. If we demonstrate it here, we consider two bodies A and B having masses ma and mb respectively. Then force on A due to B is FAB and force on B due to A is FBA. According to Newton's third law, as per Newton's third law, FAB equal to minus FBA. This third law also tells that single isolated force is impossible. That is, forces always acts in pair. As shown here, if a body A exerts force on B, FBA, then a body B must exert a force FAB on A, and these forces will be equal in magnitude and opposite in direction, but it does not mean that they will cancel out each other, since these two forces are acts on different bodies. FAB is the force on A and FBA is the force on B, and therefore they never neutralize each other. The two forces act simultaneously. Any one of them may be called as action force and second one are called as reaction force. No cause-effect relationship exists between action and reaction. मतलब कौन एक्शन होगा कौन रिएक्शन होगा ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है. किसी एक को एक्शन और दूसरे को रिएक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं. Some important points about the third law of motion. Newton's third law of motion is applicable irrespective of the nature of the forces. Second one, action and reaction always act on different bodies. As here, A and B, the forces of action and reaction cannot cancel out each other. As we discussed earlier, अभी बताया आपको कि वो दो different bodies पर act होते हैं, इसलिए वो cancel out नहीं होंगे. No action can occur in the absence of reaction. अगर reaction absent है तो कोई action force काम नहीं करेगा. Practical example based on Newton's third law. Book kept on a table. Reaction वो उसके वेट के बराबर हो जाएगा और इसलिए वो उस पर लंबे टाइम तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे डिस्प्लेस नहीं करेगा तब तक वो टेबल पर सस्टेन करेगी. While walking, B press the ground backward and feels a reaction by the ground and move forward. जब हम चल रहे होते हैं तो हम अपने पैर से
ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करते हैं और वहाँ से रिएक्शन मिलता है और हम आगे आते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर रिएक्शन फोर्स एब्सेंट हो जाए तो हम चल नहीं सकते। पैर के नीचे केले का छिलका पड़ जाए तो फिर पैर स्लिप करता है, रिएक्शन फोर्स हमको नहीं मिलता और हमारे लिए वॉकिंग टफ हो जाती है। While swimming, a person pushes water with his hand in the backward direction and feels a reaction force move forward. Rotatory lawn sprinkle works on the Newton's third law. Horse pulling a cart presses earth or ground backward, and by the reaction of ground it moves forward. Now we will discuss Newton's second law is real law of motion. Newton's second law is real law of motion means Newton's second law contains first and third law in itself. इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन सेकेंड लॉ से ही हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स थर्ड लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इक्वल टू ma. F equal to ma is the Newton's second law. If F equal to 0 means if no external force acts on the body. F 0 हो जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पर काम नहीं कर रहा है, जो बॉडी हमने कंसीडर किया उस पर फोर्स एब्सेंट है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स product of M and A must be equal to 0, but M may not equal to 0. M 0 हो नहीं सकता क्योंकि बॉडी अगर फिजिकली एग्जिस्ट करेगी तो it will have some mass and therefore M not equal to 0. If M not equal to 0 then A must be equal to 0. एक्सीलरेशन होगा वो नेसेसरली 0 होगा, और अगर एक्सीलरेशन नेसेसरली 0 होगा इट मींस, अब एक्सीलरेशन 0 की कंडीशन ऑब्जर्व करते हैं। A इक्वल टू 0 इट इज पॉसिबल व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज इन मोशन with uniform velocity in a straight line path. इसका मतलब हुआ कि एक्सीलरेशन दो ही कंडीशन में 0 हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट पर हो या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किसी फिक्स डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रही हो। अब ये दोनों ही कंडीशंस फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करती हैं। मीन्स विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ वी कंक्लूड फर्स्ट लॉ। इट मीन्स फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ. Thus, first law follows from second law, and therefore we may say that Newton's second law is real law of motion. Now, in order to prove that Newton's second law also contains Newton's third law, consider two bodies A and B which are mutually acting with each other by a force FAB and FBA. FAB and FBA. These are the forces on A due to B, on B due to A. According to Newton's second law, time rate of change of linear momentum is directly proportional to force FAB. Force on A due to B equal to dPA by dt.
time rate of change of linear momentum of body A. FAB equal to dPA by dt, and in this way FBA equal to dPB by dt. Time rate of change of linear momentum of body V. Now total force FAB plus FBA equal to dPA by dt plus dPB by dt. PA and PB are the linear momentos of body A and B respectively. Here FAB plus FBA equal to d by dt of PA plus PB. PA plus PB. FAB plus FBA equal to d by dt of PA plus PB. In the absence of external force, if there is no external force acts on the body, external force absent है, तो इसका मतलब sum of FAB plus FBA equal to 0. If external forces are absent, then FAB plus FBA equal to 0. या अब हम ये कह सकते हैं if external forces are absent, the rate of change of momentum, the time rate of change of momentum must be 0. अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम 0 होगा. हम लोग सेकेंड लॉ ऐसे डिफाइन करते हैं F इक्वल टू dP बाई dt. इफ F इक्वल टू 0 देन dP बाई dt इक्वल टू 0. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करें. इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, इट मीन्स d बाई dt PA प्लस PB इक्वल टू 0. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू 0. और या अब अगर ये RHS 0 हो गया तो LHS 0 हो जाएगा. FAB plus FBA must be equal to 0. Using this, we may write FAB must be equal to FBA, which is Newton's third law. Again, Newton's second law deduced Newton's third law. It means Newton's third law contained in the second law. And Newton, in previous case, we have seen that Newton's second law contained first law. It means Newton's second law is the real law of motion.